Yeah, you guys. How about you do high? You need that when you want that thing into why you zooming in? Because Why you zooming in? for sure, we'll be seeing. Why you zooming in? Yeah, I'm not too zoom in. Hey, don't zoom in. It's just a close up lens. Move it back. Very. Hey, there's the move. You can go like jadoo. What? Hashtag Jai What? What? Yeah, I did one. Somebody do it because he's not heavy. You, he's not heavy. He's not heavy. He's not heavy. You have to. Want to do it? Want to do it? Your brother. You would not heavy right now? You would not heavy. Not heavy. Okay, let's start it. Do it, please. Was you watching Highway? Do the next guy. Auntie there. No, because you come everybody. You're not adding any part. Okay, so you remember, you started. You start talking. You want to start it, Rama? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Thank you. It is good to see so many gathered here in the embrace of community. This candlelight vigil is, by its own definition and by our intention, a remembrance of others. There is sadness and grief at the loss we feel. So shocking in its horror, so great in its numbers, and so gripping in its connection. There is anger and rage, a rage that wants justice and equality. On March 13, 2016, a movement took place in Islamabad. A hunger strike was initiated by Secretary General Allama Raja Nasir Abbas along with 24 other Shia organizations in Islamabad. Why is that? A wave of bombings struck outdoor markets in our Shia neighborhoods this past month. Just yesterday, there was a bombing in the suburb of Sayyid Zainab. Before that, in Erbil, and lastly, in our homeland of Pakistan. 80,000 martyrs sacrificed their lives in terrorism attacks. On a regular basis, our Shia brothers and sisters are being targeted and killed. Imagine losing your father. Imagine losing your mother, your siblings, or any other loved one. I would like to introduce Kamal Rizvi to come to Surah Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Like baby's animal lives on sled. How hard you try, O Yazid. By Allah, you will not erase our memory, nor will the shame of your deeds be deleted. Our ceremony will continue as follows. There will be speeches and poems, and shortly after we will start lighting our candles and remembering our lost brothers and sisters. At this moment, I would like to introduce Sister Samna to come and say a few words. Assalamualaikum. So here we are again to condemn Shia genocide. Again, it's becoming a regular occurrence for us, unfortunately. And I mean, just this past week, when this event was organized, it was for the Shia genocide in Pakistan. And between the 4 or 5 days from when this event was started till today, there's been attacks in Karbala, there's been attacks in Sham. When does it stop? You know, our enemies are constantly attacking us, and whether it's ISIS, whether it's the Taliban, whatever forum, whatever name they give themselves today. I'm not really going to talk about them. It's actually interesting how much they care about us and how in depth they follow us, because just a few months ago they had an attack on the pilgrims of Imam Musa Islam on the day of the Shahadat of Imam Musa Islam. I mean, half of us don't even know the date of the Shahadat. And the fact that they do all this research and they attack us when we're commemorating and when mourning our imams, it just shows us exactly how afraid they are of the Shia narrative. It just shows us how threatened they feel of the power of our imams, even when they're not present in the physical form. So I don't want to spend time today talking about the enemy, because that's not what upsets me most. What breaks my heart is when my enemies attacking my people, my friends are silent. So why is it that when we gather for Al-Quds Day, which by the way is organized by Shias, everyone, all types of Muslims show up and we stand hand in hand for our Muslim brothers and sisters in Palestine. When Paris is attacked, the entire Muslim Ummah is all up in arms. The leaders in the Muslim world are out going to France and they're standing in solidarity with Europe, which is great. But then there's an attack in Baghdad and there's an attack in Pakistan, nothing. Half the Muslim world doesn't even want to, they don't even want to accept the Shia genocide as a thing. Either they don't want to accept it or they say, well, we don't know about it, we don't want to talk about it. And that's what's more upsetting. So the poem that I want to read out today, it's titled, If I'm Not Muslim, What Am I? And in this poem, the poet Nouri Sardar addresses this question of why is it the Shias aren't treating as part of the Ummah? Why is it that we don't, when we have protests to condemn Shia genocide, it's just Shias, no one else shows up, unfortunately? Are we not considered part of the Muslim world? Are we not part of the community? So Nouri Sardar addresses this and he says, yes, I hold that hill very high, but if I'm not Muslim, what am I? Yes, I hold that hill very high, but if I'm not Muslim, what am I? I hold two weighty things, the Sahaba by Muhammad. I read the book of God and I follow it instead. If I'm not Muslim, what am I? I grew up hearing scholar after scholar state that I just believe go to God's house I prostrate. Though I believe in one God and all He creates, though I believe in judgment when the hour is late.
So there's only one reason I have found such hate. There's only one reason I have found such hate, because Muhammad, my city, and Ali is its gate. Muhammad, my city, and Ali is its gate. Beyond all conjecture and doubt, this belief brought this hate about. I'm hated because by Imam Ali I'm led. I'm hated because by Imam Ali I'm led. I read the book of God and I follow in its stead. If I'm not Muslim, what am I? Day after day of our disbelief, someone sings. Day after day of our disbelief, someone sings, as if we're not just not Muslims, but we're not beings. As if we're not just not Muslims, but we're not beings. As if all evils loving that Ahlul Bayt brings. Loving companions is love. Loving the companions is love, but their love's nothing to hatred and stubbornness your intellect clings. When you know Muhammad left you two weighty things. The first is the book of his Lord. The second, his household of gold. How can you be Muslim ignoring what he said? I read the book of God and I follow in its stead. If I'm not Muslim, what am I? Let's be honest and not conjecture nor lie. We're Muslims and with this name our heads are held high. Let's be honest and not conjecture nor lie. We're Muslims and with this name our heads are held high. And yes, yearly to mourn the Ahlul Bayt we try. And yes, we lament when Ashura passes by. True love is shown when tears trickle from the eye. True love is shown when tears trickle from the eye. And here's you who not once for Hussein do you cry. And here's you who not once for Hussein do you cry. Tell me, is your belief asleep? For Muhammad's son, can't you weep? How can you not shed tears knowing his grandson bled? I read the book of God and I follow in its stead. If I'm not Muslim, what am I? Let's be honest and study your elections. Let's be honest and study your elections, which happened, by the way, when Bayt was the best of creation. If Ahmad wanted a democratic nation, why did he leave no rules, no laws, no delegation? Why did they say saying Ahmad's dead is treason? And why did they leave Ali out of the equation? Open your heart and open your mind. They left his burial behind. Do you not see falsehood when falsehood you are fed? I read the book of God and I follow in its stead. If I'm not Muslim, what am I? To defend three names, you've thrown religion away. To defend three names, you've thrown religion away. You've changed everything, yet you call me crazy? Yes, I follow and love Muhammad's family. Yes, I follow and I love Muhammad's family because he said, besides loving them, don't reward me. Let's forget about love and look at this logically. Let's forget about love and look at this logically. Muhammad raised one hand and it belonged to Ali. He's a master and not a friend, and we'll follow him till our ends. When others ran away, he slept in Ahmad's bed. I read the book of God and I follow it instead. If I'm not Muslim, what am I? It's beyond the point where curses upon us blood. You've made verdicts that make permissible our blood. It's beyond the point where curses upon us flood. You've made verdicts that make permissible our blood. There was a time you'd cut out our tongues if you could, but now to cut out our hearts you would, and you've tried everything. You've tried everything because you've understood. We'll still love this house, even if only one of us stood. We'll still love this house, even if only one of us stood, and even if our blood would stream. We're more Muslim than you're Muslim. Even if our blood would stream, we're more Muslim than you're Muslim. You couldn't fight our words, so now you cut off our heads. You couldn't fight our words, so now you cut off our heads. I read the book of God and I follow it instead. Yes, I hold that Ahlul Bayt high. But if I'm not Muslim, what am I? I hold two weighty things as taught by Muhammad. I read the book of God and I follow it instead. If I'm not Muslim, what am I? If I'm not Muslim, what am I? Salah. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. We will now take Mulana Zahir will be on the line and he has a few words he'd like to say.
You can start. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشير المصدق المصطفى الأمجد القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة الحسن روحي وأرواح العالمين من الفراغ المقدم الكلام وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں اپنے تمام تر کنیکٹیکٹ کے مومنین کو خصوص جس وقت یہاں پر جمع ہیں ان کی خدمت میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے واقعاً اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت جو اپنی نوعیت کا ایک جہاد ہے اس میں شرکت کرتے ہوئے اس امپلائی ویژن کا جو اہتمام کیا ہے پروردگار آپ کو اس کا جیسی بڑھوا نصیب فرمائے مولا تعالیٰ دلیل میں بدار السلام کا ارشاد ہے فرمائے کہ ہم ظالم کے خلاف اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں پر ظلم ہو تو وہ ظلم کے خلاف قیام کرے اگر وہ قیام نہیں کرے گا تو اس کے ایمان کی کمزوری ثابت ہوگی اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں یقیناً آپ ان سے باخبر ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی شدت کا اندازہ نہ ہو اس وقت حکومت پاکستان کے اندر وہ کام کر رہی ہے جو ضیاء الحق کے زمانے میں سپاہ صحابہ نے اپنے مطالبات کے طور پر پیش کر کے اس شیعوں کے خلاف تحریک کے آغاز میں اس کا خواب دیکھا تھا اس کو اپنی جامع پہنانا چاہتے تھے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سپاہ صحابہ لشکر جنگی القاعدہ انہوں نے کس طرح تجربات کی ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آزاداری کو محدود کیا جائے شیعوں کے عقائد کو جو ہے وہ ختم کیا جائے شیعت کو ختم کر دیا جائے اور بالخصوص آزاداری سنگ شہدا کے حوالے سے کہ چاند دیوانی کے اندر جو ہے وہ اپنی جو آپ نے کرنا ہے کرنے کے باہر نہ آئی ان کے مطالبات تھے اور آج تک مطالبات ہے اسی لیے انہوں نے تجربات کی اور ہم نے قربانیاں دی ہیں لیکن آزاداری کے دفاع کے لیے ہم کبھی بھی نہ کمپرومائز کیا ہے نہ کریں گے اب حکومت پاکستان جو کہ سعودیہ کی نوخوار ہے اور کوئی شک نہیں کہ یہ شریف برادران مذکور بند ہے سعودی حکومت کے ان لوگوں نے عملی طور پر سپاہ صحابہ کے ان مطالبات کو جو کسی زمانے میں انہوں نے پیش کیے ہوئے تھے ان کو اجرا کرنے کے تقریباً جو ہے نا وہ عملی اقدامات شروع کیے ہوئے ہیں یہ زنا بندیاں یہ زبان بندیاں یہ پاکستان کے اندر آدھا گھنٹہ جلوس لے رہے ہوتے ہیں تو مقدمات کا اندراج اسپیکر تھوڑا سا مطلب جو ہے تو اس کی آواز یعنی گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور اس کی آواز باہر گلی میں چلی گئی تو وہاں پر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر ہزاروں بانیان مجالس کے اوپر مقدمات قائم ہیں فورتھ شیڈول کیا ہے کسی زمانے میں مقدمہ دے کے بدماش ہوا کرتے جن کو ہر روز جا کر حاضر لگوانا پڑتی تھی اس وقت ہمارے جو شیعہ قیادت ہے ہمارے جو بہت سارے لیڈرز ہیں جو بانیان مجالس ہیں جو آزاداری کا اہتمام کرتے ہیں ان پر وہ فورتھ شیڈول کے ذریعے جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا دہشت گرد ہمیں مانتے ہیں اور حکومت ان کی سرپرستی کرتے ہوئے ہمارے ہی خلاف اقدامات کرتی ہے ہمارے ہی بانیان مجالس کو پکڑتی ہے کیوں مطلب یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیوارث قوم ہے یہ معذرت کے ساتھ شاید مردہ قوم ہے شاید بےحس قوم ہے شاید یہ جو ہے نا وہ ظلم برداشت کرتی رہے گی اور یہ کچھ نہیں کرے گی لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ ہم واقع ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی معاملے میں ظلم برداشت کرتے لیکن ہم کبھی بھی آزاداری کے حوالے سے جو ہے نا برداشت نہیں کرتے ہم نے آج تک تاریخ گواہ ہے وہ کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے افغانستان ہو ایران ہو عراق ہو لبنان ہو دنیا کی کسی بھی خطے میں جہاں پر بھی آزاداری کا مسئلہ ہے تو ہم مومنین نے قربانیاں دی اور یہ ہمارا فخر ہے اس وقت جو علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب پاکستان نیشنل کلب اسلام آباد کے سامنے پریس کلب کے سامنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں
इंतकाल किए हुए 1 महीना, और ये बेहिस हुकूमत जो इंसानियत भी जिनके अंदर जो है वो नहीं है, और जिनको कोई भी मतलब जो है फर्क नहीं पड़ता दूसरे मानों में, जो मजलूमियत की जुबान नहीं समझती, जो अमन की जुबान नहीं समझती, जो आदाब व अखलाक के दायरे में रहते हुए मुतालबात को पेश करने को नहीं मानते, जिनके नजदीक जो है वो कत्ल वारदात और बसों को जलाना और जो है ना वो गाड़ियों को तोड़ना और गोलियां चलाना, और वहाँ पर जो है पुरतशद्दुद अगर जो है ना मुजाहरे करेंगे तो जाकर जो है ना ये लोग थोड़ा बहुत जो है वो मुतालबात को सुनने के लिए तैयार होंगे। लेकिन हम लोग जो अमन पसंद है, जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, जिन्होंने अपने मुल्क की कुर्बानियां दी और अपने मुल्क का इस्तेमाल चाहते हैं, एक नए अंदाज में अपने मुतालबात को पेश करने के लिए राजा साहब ने कुर्बानी दी, आगे बढ़े। लेकिन ये हुकूमत जो है ना बेहिस दहशतगर्दों की सरपरस्त हुकूमत, दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखने वाली हुकूमत आराम से बैठी हुई है। तो यकीनन राजा साहब ने बहुत ही जरूरतमंदाना काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान के अंदर भी मोमिनीन की और मुसलमानों की सोच तब्दील हो रही है। तारीख़ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ पहली मरतबा ये हो रहा है कि सुन्नी पीसीओ के साथ खड़े हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है जो अपोजिशन के साथ अलग करती है, उन्होंने आकर मुतालबात की हमायत की है, और इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शिया कौम के मुतालबात सिर्फ शिया कौम के मुतालबात नहीं है, बल्कि माइनॉरिटीज के मुतालबात है, सुन्नी शिया के मुतालबात है, सिखों ने आकर हमायत की है। और हम लोग जिनको सिवाय नामत जो है ये चाहती थी कि वो शिया जो है गांव में चले जाए, इनको माइनॉरिटी करार दे दिए जाए, इनको काफिर करार दे दिए जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान के अंदर सुकर आपको बताना मेन स्ट्रीम में मौजूद है। और ये रक्षा की और अफगानिस्तान की जो है, और ये एक किसी जमात का मसला नहीं है, ये शिया कौम की बात हो रही है, नजरिए से शोहदा की बात है, ये शोहदा के मामलों से हमदर्दी की बात हो रही है, मजलूमियत का साथ देने की बात हो रही है। ये सारा सिलसिला जो है वो उन मजलूमों के लिए जिनको गोली मारनी जाती होगी, सामने से बात को पकड़कर उन्हीं को कहा जाता है कि तुम कन्विंस करो कि तुमने जो है गोली चलाई थी। ये उस सोच के खिलाफ जदोजहद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तौफीक का खैर में इजाफा फरमाए। हमारा ये वजीफा बनता है कि हम दुनिया को बताएं कि हम एक हैं। पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी जुल्म होगा तो हम, जैसा कि जब जिंदगी के खिलाफ जो है वो जब एक्शन लिया गया तो हमने जो है वो मुजाहरात किए हैं, और इस तरीके से जो है वो आइतला बात डबल के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक बेदारी की लहर पैदा हुई। अब हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी बका का मसला है, हमारे अपने अकायद का मसला है, हमारे अपने तशद्दुद का मसला है, अदालत का मसला है। उसके लिए शिया काफी किरत जो हो रही है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर करते चलूँ, मेरा पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च की गई उसके बाद ये पता चला कि काफिर जो है वो इस तरह प्रोफेशनल है कि अब तक वो दूसरी गोली राय नहीं करता है, एक बुलेट से बंदे को शहीद कर देते। यानी इस हद तक जो है वो ये लोग प्रोफेशनलिज्म को लेकर आकर वहां पर जो है वो मजलूमों को जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं, हुकूमत ने जो है वो जान पूछ के फर्जी के मामले को उठाकर देखे, वो सोशलिस्ट था, वो एक्टिविस्ट था, लेकिन उसको जो है दहशतगर्दों की रैपोग्राम पर छोड़ दिया गया और उसको बड़े बाजार में जो है वो करके बाद में, और आज तक जो लोग शामिल करती है। तो ये सारी बातें सामने रखते हुए हमारा वजीफा बनता है कि दुनिया में हम जहाँ पर भी हो जो हो सकता है आप करें, आवाज बुलंद करें। अगर हम नहीं करेंगे तो यकीनन हमारे ईमान की कमजोरी, और ये जुर्म होगा। यहाँ पर इस वक्त जो महाज लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये महाज है, और इसकी जिस तरह से हो सके हमने सपोर्ट करी, और यकीनन यहाँ पर माहवार रमजान के अंदर आप लोगों ने ये जो काम किया है, परवरदिगार इसका आपको अजीज अजीम रहमान नसीब फरमाएगा। ये इज्तिमाई मामला है, ये जाती मामला नहीं है, और इसके लिए ये वाजिब किफाई है। यदि यहाँ पर खामोश रहना भी ज्यादा वो जुर्म का होता है, लेकिन बहरहाल अपने तौर पर मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा हमें करना चाहिए। और यकीनन पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ये जो वो करता कैंप लगा वो उनकी बहुत सारी जरूरियात है जिनका हमें ख्याल रखना। और उसके अलावा अभी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि इंशाल्लाह फ्राइडे को, आई बिलीव फ्राइडे को हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूयॉर्क के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जो है वो एक प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके रेडियो के मोमिनीन जो है वो इंशाअल्लाह उसमें भी जो है जरूर शिरकत करेंगे, और उसके साथ साथ खबरें जो है वो देखते रहें, आगाह रहें पाकिस्तान के मसाइल से, और अपने आप को ज़हनी तौर पर भी आमादा रखें। हम जो है वो बेदार कौम है यकीनन, और हमारी जो है वो गैरत ईमानी बेदार है। हम लोग जो है तेजस नहीं है, और हम लोग कभी भी जो है वो जुल्मों से तुमको ना बर्दाश्त करते हैं ना करेंगे, और जो भी हमारा वजीफा बनता है वो हमें अदा करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ एक ही कदम है, आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका नसीब
है, बेहतरीन लोग इबादत है। एक बेदारी होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेदारी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद जरूरत है कि हम ज्यादा बेदारी का जो है वो सबूत दें और ज्यादा जो है वो अपनी कौम के साथ मजबूत रहें और इंशाअल्लाह अमली इक़दाम जो है वो करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं एक बार फिर दुआ करूँ और आप लोगों का भाई को मशहूर भी हूँ और उसके साथ साथ वाकई आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने ये काम किया है। इंशाअल्लाह नज़ीर इससे जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी खुशनुदी हासिल होगी और ये बेहतरीन नौ इबादत भी है। जज़ाकल्लाह और सलाम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, Lonzo, for taking the time out to speak with us. Thank you. I would like to now ask Sister Tara to come and say some words for us. So what? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने यूथ को बहुत ज़्यादा शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ाम किया और आज हम सब यहाँ पर हमारी एज के जो लोग मौजूद हैं वो सब आप लोगों की वजह से मौजूद हैं और ये बताती है बात इस बात को कि आप लोग करंट सिचुएशन से जो अराउंड द वर्ल्ड शियों के ऊपर मौजूद है, आप इससे कितने ज़्यादा वाकिफ हैं और कितना कंसर्न है आपको इसका। बहुत ज़्यादा तो मैं स्पीकर बनकर नहीं आई थी, इस वजह उन्होंने मुझसे कहा है कि कुछ बोल दें तो बोल रही हूँ। उसमें से कुछ बातें ज़रूर मेरी ऐसी हैं जो सबको इस वक्त बुरी लगेंगी, लेकिन जब आपने बुलाई दिया है तो मौका दें। पहली बात तो मैं ये अपने यूथ को एडवाइस करना चाह रही हूँ कि जितना आप लोगों ने एफर्ट किया है, अगर इसमें अच्छा होता, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप लोगों का एक्सेस है लोगों तक, यू नो हाउ टू डू थिंग्स और हाउ टू यूज मीडिया। अगर आप लोग इस महफिल में किसी मेयर को, किसी कांग्रेसमैन को, किसी सेनेटर को बुला लेते या आप उनके पास पिटिशंस भेजें साइन करा के, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं और हम लोग वोट करते हैं, तो वो लोग जरूर हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि बैक होम हम लोग परेशान हैं, हम सबके रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं और अगर नहीं भी रहते तो हमारा फेथ जो है, सेम फेथ के लोग वहाँ पर परेशान है। तो अगर आप किसी ऑफिशियल को यहाँ पर बुला लेते और बताते कि हम लोग कितना परेशान हैं इस सूरत हाल से, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। या जैसे भी मौलाना ने कहा है कि न्यूयॉर्क में इंतजाम हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जाएं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम इससे पहले भी बहुत दफ़ा प्रोटेस्ट कर चुके हैं। जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर बॉम्बिंग हुई थी, उस वक्त भी हम गए थे, उसके बाद भी गए, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में जब तक हम यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कांग्रेस में, सेनेट में, उन लोगों से राब्ता नहीं करेंगे, हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए मैं ये दलील रखती हूँ कि हमें सीरत नबवी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जिस वक्त मक्के में मुसलमानों के ऊपर सख्त वक्त था, तो रसूल अल्लाह ने क्या किया था, नजाशी के पास भेजा था, ही वाज नॉन मुस्लिम, ही वाज क्रिश्चियन, और मुसलमानों को वहाँ से बहुत अच्छी मदद मिली थी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ के ऑफिशियल से, अपनी अथॉरिटी से, पाकिस्तानी हुकूमत को तो भूल जाएं, तमाम मुसलमान हुकूमतों को, तमाम मुसलमान मुल्कों की हुकूमत को भूल जाएं, दे नॉट गोना डू एनीथिंग फॉर अस बिकॉज दे डोंट केयर अस। ये उनको बेनिफिट करता है, जब अवाम आपस में मिलते रहते हैं तो उनकी हुकूमतें चलती रहती हैं। हम सब जानते हैं लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी। ये वाली बात तो मेरी एडवाइस थी, पता नहीं आप लोगों को कहाँ तक पसंद आएगी और आप इसको कहाँ तक कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ, अगर आप लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिएगा। अगर आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। ऑनलाइन है बस तो फिर इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आप लोग आइंदा अगर मेरा ख्याल है इससे ज्यादा करते तो इससे ज्यादा लोगों को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि क्योंकि हमारी कम्युनिटी इससे ज्यादा बड़ी है। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि यहाँ की किसी अथॉरिटीज को, मेयर वगैरह को बुलाएं, पिटिशन साइन करें, उन्हें बताएं कि हम लोग यहाँ पर कितने परेशान हैं इस किलिंग की वजह से। और जाहिर है कि बेवाओं के, यतीमों के और जो
पेरेंट्स हैं जिनके बेटे मारे गए हैं, उनका ढेर लग गया है और समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक दो किलिंग का मामला नहीं है। फर्ज करें कि अगर किसी फैमिली में एक शख्स की किलिंग हो गई है तो आप उसको यहाँ से बैठ के सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तो एक ढेर लगा हुआ है बेवाओं का, यतीमों का। आप कितनी फैमिलीज को सपोर्ट करेंगे? शहीद फाउंडेशन है ये जो कुछ भी, तो इसका मसला ये नहीं है कि आप लोगों को सपोर्ट करें, इसको पॉलिटिकल वे में हमें सॉल्व करना है। और हमको उसी तरीके से, आपको हम सबको पता है कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है अमेरिका की नमकख्वार है। इनके जो अब्बा बैठे हुए जिनका नाम अमेरिका है, वो इनको ठीक कर सकता है, तो हमें यहाँ की अथॉरिटीज को अप्रोच करना चाहिए। आप लोगों ने जो किया है इसको और ज्यादा कीजिए, और ज्यादा कम्युनिटी को इस पर शो अप करना चाहिए था, और बहुत ही अच्छा काम है, इसको करते रहिए। और इंशाल्लाह जितनी सपोर्ट हमारी उम्र के लोग आपको कर सकते हैं, कम्युनिटी कर सकती है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for your words. Inshallah, next time we will definitely focus on more goals to achieve. At this point, I would like Sister Savannah to say a few words. Assalamu alaikum, everyone. So, some of what I said earlier, how we talked about us linking arms and stuff for other events that have happened to people like Oaklands and stuff like that, and why we don't get together, why we don't get the same results for Shia killing. And there's a term in psychology, it's called the bystander effect, which comes into play at a very big scale when it comes to Shia genocide or anything regarding Shias. People step back. The bystander effect talks about how you don't do it, or the question simply is that why should I do it? There's so many other Shia people. There's so many other members in the community that can come to this. Why should I? Why should I take time out of my day? Or why should I be the one to start something on social media? Why should it be me? What will my friends think? What will fellow schoolmates think? What will become of me? Like, why am I responsible? Someone has to be responsible. And we're all responsible. Being a Shia makes you responsible. And being a Shia makes you aware of everything that is happening in Bahrain, in Syria, in Baghdad, in Sham, in Pakistan, in all the places where this genocide is happening, this terrorism is happening. It makes you responsible for getting out the news. I've said this before in my speeches, that our biggest and most valuable asset is media, social media. And I have a personal story to share because I think that might make a small, very small difference in your time. I shared a video of Amar Chani's speech on Facebook. Just a simple share, I liked it, I shared it, thought my other friends from Jafaria might appreciate it. A friend of mine watched it, a friend from school. She watched it, she understood it because it was spoken in English. She did her research, and she came to me the next day. We had our chat at lunch, it was over. Just as that, small thing. She went home at dinner. Her parents had this thing where they talk about daily events and stuff like that. She shared this video. She talked a little bit Shia genocide, and that was it. Her parents went to work. Somehow the conversation came up. They added their part, what they learned through Sam, which learned through me in the video. Just like that, there was a chain reaction. Something so small, something that we won't even notice because it's so minor, but it makes a difference. Because I know that my sharing that video, my friend coming up to me, having that conversation, made a difference. Now she's aware of it too. Her parents are talking about it. Their colleagues know about it. There's that chain reaction. The bystander effect was put aside in that. She wasn't responsible. She didn't have to share. She didn't have to share that information. She could have said anything. She had nothing to do with the concept, but she shared it. Her parents didn't have anything to do with that, but they shared it at work. And now their colleagues are aware of it, and maybe they went home and shared it with their families, and such like that. So there's small things, small things that come together to make an impact. Social media is such a big thing. Facebook, I don't think is that big anymore, but Twitter is huge. And there's so much you can do with Twitter.
There's so many hashtags you can add. There's so many people you can add. There's so much. And I feel like Snapchat is big too. Like there's so much you can post, even on our stories. Like right now we're Snapchatting this right now. Our friends are seeing them. They're probably gonna ask us what's going on. Small things like that make a very big difference. So I'm not gonna take much of your time. It's things I've said before and things I'm reinforcing. Shia genocide isn't gonna come to an end until Shia people stand up for it. We're not gonna get the help like France did and Russell did because we're not standing up for ourselves. You need to help yourself first in order to gain help from someone else. It's that simple. That's such a minor thing that you have to do. Nothing big. Make your own chain reaction. Make a difference. It's small. Everyone starts small. Everyone starts minor. But they get somewhere eventually. If we're not gonna start, we're not gonna get anywhere. So it's that put that bystander fight aside. Psychology isn't anything. You don't have to put the bad into play. Put the good into play. Take responsibility. That's all. That's all you really need to do. That's all I have to say. So thank you for listening. At this point, we have another speaker from MWM, Mulana Alama Hassan Haqqani, as the last one from Pakistan. Walaikum salam. आप लाइव जा रहे हैं. You can start your speech. You can start now. आपके भाइयों आपके बहनों का खून बर्बाद कर दिया गया तो पाकिस्तान की जिसको हासिल करने में हमारा माल हमारा सरमाया हमारे नमूस कुर्बान हुई कि जिसके बानी कायद आज़म मोहम्मद जना और जिसके मुसव्विर हमारा तो मोहम्मद इकबाल ने एक नज़रिया दिया था ये दो कौम नज़ीक में मौजूद लाया था कि बरसरीन में दो कौमें आवाज़ एक मुसलमान दूसरी हिंदू जो कि दोनों का इंसान अलग है वायद अलग है दोनों का मामला जिंदगी अलग है इसलिए मुसलमानों को इस जमीन में एक अलग ममलकत चाहिए जहाँ ये आज़ादी के साथ अपनी आवाज़ सर अंजाम दे सके उस दुनिया में जब पाकिस्तान बना तो आम पाकिस्तान में खसूसी शुरू मौजूद थी कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मसाइल को बदियान अपनी मजबूत आज़ादी के साथ यहाँ पर इबादत गुजारा सकेंगे लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हमने आज सुबह करने की कोशिश की गई हमारे बच्चों को जगह किया गया कत्ल किया गया हमारे डॉक्टरों को मारा गया हमारे इंजीनियर्स को मारा गया हमारे प्रोफेसर्स को मारा गया हमारी करीब मुसलमान करीब को चुप चुप के कत्ल किया गया हमें तहदीद किया गया खुद उस जगह में मौजूद लोगों ने हमारे खून से अपने हाथ रंगे आज पूरे पाकिस्तान में हम सरापे एहतजाज हैं हमने धरने दिए एहतजाज किए रैलियां निकाली हमने मुख्तलिफ तरीके से अपने एहतजाज को अपनी आवाज को बुलंद किया लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई अब आज 13 मई से
नासिर इब्न नासिर जाफरी इस्लामाबाद की सरजमीन पर भूख हड़ताल किए हुए हैं और उनका एक ही मौकफ है कि हमारी मिल्लत का खून इतना अर्जा क्यों है, इतना सस्ता क्यों है। हमारे दीन हमारी सर्विस में कुछ नहीं करती, हमें ज़बह किया जाता है, मारा जाता है और सर्विस में मौजूद लोग हमारे खून में अपने हाथ रखते हैं। अभी इस साल 3 मुअज़्ज़म को लोग हुसैन में पाराचनार में हमारे नाते मोमिनीन पर फैल करके एफसी के लोगों ने तो 4 लोगों को शहीद कर दिया और कहा कि हमें दहशतगर्द मार सकते हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने बहुत से रजू किया लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम दुनिया भर के तमाम Brother Saman, would you like to say a few words? Allah. Salawat. So, before coming here, I had some thoughts, and I want to share them. And I apologize in advance if I'm politically incorrect. I just had some thoughts I wanted to say them. So, first of all, everything is a learning experience. Whether it's something bad happens, you're gonna learn from it. Whether something good happens, you're gonna learn from it. And the beauty of learning is that you've taken all this knowledge, you inhale, you absorb all these ideas and concepts, and you're able to spit them back out. If I learn something, I'm able to teach someone else, right? And that's very vital to everything in life. So, going on, like we're here today to condemn Shia genocide. As Shias, it's very dear to us, having our own brothers and sisters being killed for their own beliefs. And it hurts, like there's a certain part in our heart where it hurts because they're Shia and they're Pakistani, and it's going to hit us directly here. And as we condemn like oppression against Shia Muslims, it's also very important that we also condemn oppression against all minority Muslims, not just Shias, uh, Sufis, Ahmadis, and so on and so forth. Because not even that, we should also condemn the oppression of all humans, right? We're all humans and we all share that. So we condemn oppression, we have to condemn every single oppression there is, and I know it's hard. We can't pick and choose, but that's what we do. We pick and choose because we're human and we're going to favor something closer to us. We're having like a event today about Shia genocide because we're all Shia here. We have Pakistani brothers and sisters and relatives in Pakistan who are being hurt by this. And it's kind of contradicting that we only care about one oppression. We have to take a humanitarian stance and care about every single oppression individually, and it's tough. It takes a lot out of your heart, and you need a really big heart to care about every single oppression equally. Um, and yeah, so and it's not just Shia Muslims in Pakistan that are being discriminated against. Let's see, there's Ahmadi Muslims in Pakistan. They're not even considered Muslims, and they pray namaz, they celebrate Ramadan, but they can't celebrate Ramadan in Pakistan because they're not considered Muslim. They're killed for being Ahmadi, just like we're being killed for being Shia. And what's even worse is that their bodies are taken out of graves because scholars believe that it's haram to have an Ahmadi Muslim's body in a grave next to another real Muslim's body. So these are some things that we should know about. Just the other day, a Pakistani Hindu was attacked for eating during fasting hours, and that's disgusting. Like we're in the East, we're plagued with a mentality of being stubborn and having a superiority complex, and it's sort of like if you're not like me, if you're not similar to me, I'm gonna be against you, and you can see that a lot in countries like Saudi Arabia, even Pakistan or India. That if you're not similar to me, if we don't share common ground in beliefs or anything in general, you're my enemy. So it's our job to keep these people in our du'as at all times. And though being killed for being Shia is not our reality in the States or even in North America, it's a reality in only the East
over here, we're basically gonna be killed for being Muslim, because that's the level we're at right now. And to prevent any advancement in like this hatred, it's our job to teach people what Shia Islam is in a thoughtful manner. So, so back to learning and knowledge, it's our job to knowledge is a double-edged sword, right? It's either good for you or it's bad for you, and right now it's being used as a weapon against us, as even Muslims and even as Shias. Like for instance, I know like other Muslim brothers and sisters, they're being taught false things about Shias. Like just the other day, someone asked me like, "Hey, you guys believe that prophet is the last prophet?" I'm like, "Yeah," and they're like, "Oh, I was taught something else." And I was also taught that you guys don't believe in Allah, you guys believe in some other guy whose name's Ali, right? So little things like these that are being taught from generations ago and are still being here, and they're really silly things, right? And it's our job as Shia Muslims to clear the misunderstanding that we have, that other people have against us. So it's imperative that we use knowledge as a tool to explain Shia Islam, right? And if, as Sister Safina was saying, that it's a chain effect, right? If I teach one person, it's as if I'm teaching 100 people, right? If I teach my sister something, right, she's gonna tell her friends are gonna tell their friends, and so on and so forth. And that's how knowledge works. You have to use it as a tool. And just giving away knowledge isn't isn't the only thing we have to do. We have to take in knowledge. And as Muslims, we don't just have to learn about Shia Islam. We have to learn about Sunni Islam equally, Sufi Islam, Ahmadi Islam, Ismaili Islam, and so on and so forth. We have to learn all this stuff because our biggest challenge as Muslims in this generation is achieving unity. And we can't achieve unity without learning and respecting each other. And it takes time. It takes a lot of years to get to that point, right? But if we don't start now, it'll never happen, and that's something that we should start today. Thank you. I'd like to now introduce Sister Alina. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। मुझे बहुत कम टाइम दिया गया था कि ये सब मैं ऑर्गेनाइज करूँ, एक हफ्ते का टाइम था, इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ कि सही तरीके से सब कुछ नहीं हो सका और जिन लोगों को हमें बुलाना चाहिए था वो नहीं आ सके। लेकिन मैं मुसलसल दिन रात राब्ते में थी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी जो हैं अल्लामा राजा नासिर साहब और दीगर जो उनके साथ काम करते हैं, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हसन अंकल के जो ट्विन ब्रदर हैं हुसैन सैयद हुसैन जैदी, और उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई और हेल्प किया ये सब आज ऑर्गेनाइज करने में। तो मेन जो पॉइंट्स थे कि जिस वजह से पाकिस्तान में ये हंगर स्ट्राइक हो रही है और हमारे तमाम शिया सुन्नी भाई मिलकर ये सब कर रहे हैं, तो जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको बस जल्दी से हाईलाइट करना चाहती हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि हमारा मेन रीज़न क्या है ये सब कुछ करने का। सबसे पहले तो शिया नस्ल कुशी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। नंबर 2, रियासती और अक्सरी इदारे शिया मुसलमानों के कत्लेआम में मुलविस दहशत गर्दों के खिलाफ खामोशी खत्म करें। जो नंबर 3 है वो कल अदम तंजीमों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और नाम बदल के काम करने वाली तंजीमों के सरगर्मियों को रोकें। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर होने वाले दहशत गर्दी के हमलों के मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा जाए। पाकिस्तान में मौजूद तमाम मसलक के लोगों को तफरीकी दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट अपनी शिया दुश्मन पॉलिसी फ़ौरन ख़त्म करे। अज़ादारे सैयद शुहदा पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनको फ़ौरन बंद किया जाए और जिन लोगों के घरों में मजालिस होती है उसके लिए FIR काट दी जाती है उसको ख़त्म किया जाए और ज़ाकिरीन पर पाबंदियां हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो हमारे शिया उलमा नाजायज़ अरेस्ट किए जा रहे हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा में शिया किलिंग पर खामोशी खत्म की जाए और गवर्नमेंट बहुत सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन ले। पारा चिनार में बेगुनाह शहीद होने वाले लोगों के लिए जो है वो एक कमीशन बनाई जाए जो उनको इंसाफ फराहम करे। गिलगित बलोचिस्तान पारा चिनार की डेमोग्राफिक तब्दीली करने की साजिश
اور حکومتی سرپرستی میں شیعہ نے حیدری کرار کے زمینوں کو ناحق قبضے میں لے دیا گیا ہے، اس کو فوراً سے پہلے ختم کیا جائے۔ نمبر 10 اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے مسلکی بنیاد پر پاکستان کی تقسیم کی سازش کے خلاف عالمی اقدامات کیے جائیں۔ یہ تو وہ مین پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اور میں اس کے بعد آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئے، جو لوگ آ سکے خاص طور پہ ان کا بہت زیادہ شکریہ، جو نہیں آئے اور ہم کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ اس کے بعد میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہم حسینی جہاں پر بھی موجود ہیں ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہیں اور اس طرح کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہیں گے، اور نو میٹر شیعہ سنی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں ان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد میں جمیل صاحب جو یہاں پر آئے ہیں، سوری میں نام ذرا صحیح سے لے لوں، جلیل رحمان صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ وہ پلیز آئیں اور کچھ تھوڑا سا بولیں۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ٹونائٹ، تھینک یو۔ جی، اور اس کے بعد ناصر چیمہ صاحب ہیں، وہ بھی آ کے کچھ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے، وہ ہمارے ہیلپنگ ہینڈ کے کنیکٹڈ چیپٹر کے ممبرز ہیں، تو یہ آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نصلی رسول کریم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار آپ سے کروں گا۔ مجھے یہاں آنے کے بعد کہا گیا کہ میں کچھ کہوں تو اس لیے ان میں شاید ربط نہ ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنا میرے دماغ میں باتیں ہیں وہ آپ سے میں کروں۔ سب سے پہلے تو مجھے اس نوجوان کی باتیں بہت پسند آئی ہیں اور بڑا انکریجنگ ہے کہ اگر بچے ہمارے اس طریقے سے سوچتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں راجہ بھائی جانتے ہیں کہ میرا شیعہ کمیونٹی سے تعلق نہیں ہے اور میں آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن میرا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ میرا شیعہ کمیونٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور یہ جو حسین سے پیار کرنے والے لوگوں کو وہ سمجھے کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، تو یہ بھی پاسبل نہیں۔ تو اس لحاظ سے میرا ڈیفینیٹلی تعلق ہے۔ دوسری چیز جو مجھے بار بار میرے دماغ میں آتی ہے کہ جو شیعوں کا جینوسائڈ پاکستان میں ہو رہا ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ اپیلیں کرنے سے نہیں ہوگی۔ اور اپیلیں جن لوگوں کو آپ کر رہے ہیں، ظالم تو وہی لوگ ہیں۔ اور صرف میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں، اور میں جو لوگ شیعہ نہیں بھی ہیں ان کو میرا میسج یہ ہے کہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ ظلم کا ساتھ دیں گے۔ تو کم از کم اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو خاموش تو نہ رہیں اور آواز اپنی نکالیں۔ اور آپ لوگوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ یہ جو سمپل اپیلیں ہیں ان سے کام نہیں چلے گا۔ یہ شیعہ مسئلہ نہیں ہے، شیعہ ہونے سے پہلے انسان ہیں، اور یہ ہیومینٹی کا مسئلہ ہے جیسا اس بچے نے کہا، اور آپ کو بھی اسی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو کھڑا کرنا چاہیے، چاہے وہ UN ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو۔ یہ ہیومینٹی کا قتل ہو رہا ہے اور اس کو شیعہ کو ایک وجہ بنا کے، تو اس لیے یہ جو زیادہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اس کو پاکستان میں تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پہ جیسے ایک خاتون تھی، انہوں نے جو بات کی بالکل صحیح بات کی کہ پاکستان میں اپیلیں کرنے سے اور لوکل لوگوں کو اپیلیں کرنے سے وہی لوگ تو کر رہے ہیں، تو آپ اسی سے کچھ امید رکھ رہے ہیں یا انہیں کو اپیلیں کر رہے ہیں۔ اپیلیں کرنی ہے تو باہر کی حکومتوں کو کریں، اور اپیل سب سے بڑی جو کرنی ہے آپ ضرور کرتے ہوں گے لیکن وہ خدا سے کریں۔ ظلم کے خلاف بچانے کے لیے اس سے بڑا کوئی اور شخص نہیں ہے اور کوئی اور حکومت نہیں ہے، اور جس طرح سے ہو رہا ہے ضرور وہ دیکھ رہا ہے وہ، لیکن شاید وہ آپ سے اور چاہتا ہے کہ آپ اور روئیں اور دعائیں کریں اور اپنی حفاظت کے لیے اس سے آپ مانگیں، اور انشاءاللہ ضرور یہ ظلم جو ہے، ظلم کبھی ساری عمر چلتا نہیں رہتا، ظلم کہیں نہ کہیں آ کے رکے گا،
اور ظلم کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ جن پہ ظلم کیا جاتا ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کے نکلتے ہیں. اور آپ نے اپنے کمیونٹی میں بھی یہ دیکھا ہوگا, جب کبھی زیادتی ہوتی ہے, جب کوئی خبر آتی ہوگی پاکستان سے, تو آپ کے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہوگی. تو اس لیے اس طرح کے ظلم کرنے سے وہ کسی کو ختم نہیں کر سکتے, صرف اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں. اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ لگے اور ان چیزوں کی اور ایسی چیزیں کرنے سے باز آ جائے. خدا حافظ. چند اور باتیں جو میں کہنا بھول گئی تھی, بس جلدی میں یہ بتا رہی ہوں کہ مدیرے سے جو MWM ہے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج 29واں دن ہے اور اب رمضان کے بعد انشاءاللہ اگر طالبات منظور نہیں ہوتے تو پھر لانگ مارچ ہوگا اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ شرکت کر سکتے ہیں, ہم جس طرح پہ یہاں پہ پروٹیسٹ کریں, ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہم وہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اب میں چیمہ صاحب کو کہوں گی کہ پلیز وہ آگے کچھ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ ہمیں اس چیز کا موقع دیا کہ ہم آئیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے مل جل کے اپنے اظہار کا خیال کریں. اور I wasn't mentally prepared کہ میں نے یہاں آ کے کچھ بولنا ہے. جب میں نے ای میل میں پڑھی اور میں نے راجہ بھائی سے بات کی, پھر میں نے آئی واز گوئنگ ان ڈیٹیل کہ what happened. تو لیکن جب میں نے یہاں آ کر دو سسٹرز نے بڑی اچھی اسپیچ کی اور ماشاء اللہ اس بچے نے, تو آئی گاٹ اے ویری گڈ فیڈ بیک کہ الحمد للہ کہ آج کا یوتھ جس طریقے سے سوچ رہا ہے ممکن ہے ہم آپ کی ایج میں اس طرح نہ سوچتے ہوں. تو یہ ہے حالات ہمیں اس چیز کے دے رہے ہیں سبق کہ where we are moving towards. تو اٹس اے ویری پازیٹیو اپروچ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہاں اس وقت کھڑے ہو کے اسپیچ کرنا اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ we go together, چاہے میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں, doesn't matter. We are as a human being. ہمیں ہیومینٹی کو بچانا ہے. خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری انسانیت کا قتل کرتے ہیں. تو if we firm believe on it, تو we should unite together, think together and act together. تو میں ایز اے سنی یہاں نہیں ہوں, میں ایز اے انسان کھڑا ہوں اس وقت, ایز اے مسلمان انسان ہوں, اور میری سالیڈیٹی اس چیز کا ثبوت دیتی ہے. اور انشاءاللہ جو آپ کی ایفرٹ ہے, جیسے کہ جلیل صاحب نے کہا کہ یقیناً جو ظالم لوگ ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہمارے حکومتوں میں, وہ رہیں گے, وہ تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن ہم نے اپنی یونٹی کو کیسے انکریز کرنا ہے, نمبر کو کیسے بڑھانا ہے, اور اس طرح کے پیسفل جو موومنٹس ہیں, اس پیسفل موومنٹ کی جو امپیکٹ ہے وہ رزلٹ آ سکتا ہے اگر ہمارے نمبر آف پیپل بڑھ جائیں. وی ہیو ٹو آؤٹ ریچ مور اینڈ مور پیپل. میں آپ کے ساتھ ہوں, جس وقت بھی آپ چاہیں مجھے آپ آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں. راجہ بھائی کے پاس نمبر ہے. we can have more this kind of movements after the Ramadan or during the Ramadan, inshallah. And may Allah bless you all, may Allah reward you all, and Assalamu alaikum wa rahmatullah. آپ حضرات کا بہت زیادہ شکریہ. ہم آپ کے جذبات کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. اور بس کچھ آپ سب کا ایک بار پھر سے شکریہ, یوتھ کا شکریہ کہ میرے لاسٹ منٹ نوٹس پہ آپ سب لوگ جمع ہوئے اور رمضان کے امتحان پہ لیکن پھر بھی اس نے ٹائم نکالا. سکینہ, سلمان, سمانہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. I'm really thankful to you guys. راجہ انکل, اب لاسٹ میں آپ آگے پلیز کچھ بولیے. اور میں اپنی طرف سے جو پاکستان میں ہمارے لوگ کیمپوں میں بیٹھے ہیں اور اس وقت بھوک ہڑتال کو کیری آن کیے ہوئے ہیں, ان سب کو امام زمانہ کی ضمانت میں دیتی ہوں, پاک بیوی سیدہ کی, کہ وہ بھی خیریت سے رہیں اور یہاں پہ ہم بھی خیریت سے رہیں. اور جلد ہی ہم ایک اور اس طرح کا پیسفل پروٹیسٹ آرگنائز کریں گے
जिसमें हम तमाम मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जमा करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे ताकि सब साथ मिलकर इस मसले का हल निकालें। जी, राजा अंकल प्रेसिडेंट हैं जाफरी एसोसिएशन ऑफ कनेटिकट के, और बोर्ड मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का, और सारे कम्युनिटी मेंबर जो यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे ख्याल में इंग्लिश में बोलना चाहिए या उर्दू में बोलना चाहिए? शुक्रिया बहुत बहुत। और सबसे पहले तो अर्जिला का बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत ही कम वक्त में और माशाल्लाह से काफ़ी लोगों को जमा कर लिया और काफ़ी मटीरियल जो है वो जमा किया और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। बहुत शुक्रिया। और हमारे जो मेहमान थे जलील भाई और चुनाव भाई, उनका भी बहुत शुक्रिया। वो भाई और इन्होंने हमारा साथ दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी साथ देते रहेंगे। और अभी चीमा भाई से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह इसको किसी बड़े पैमाने पे करेंगे और कुछ स्कॉलर्स वगैरह को कुछ उन लोगों को बुला के यहाँ जो है मतलब इस सिलसिले में एक ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े पैमाने पर ये काम करेंगे। आज बहुत शुक्रिया आपका बहुत। और हमारी जो सपोर्ट है अपने राजा नासिर अब्बास साहब के लिए, और जो भी हम लोग यहाँ बैठ के कोशिश कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट हमारा हेल्पिंग हैंड जो है वो आपके साथ है। और वी आर एज ए जाफरिया एसोसिएशन ऑफ कनेटिकट, जो भी हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए उन तमाम हजरात के लिए। यहाँ मौलाना जहीर और वसन साहब ने जो है जो अमेरिका में है, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा किया है। और उस सिलसिले में वो वाशिंगटन से लेके और न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया तक काफ़ी जो है गैदरिंग कर चुके हैं। और हम उनके भी साथ हैं और हमारी कोशिशें हैं कि इंशाल्लाह जो भी हम यहाँ कैलिकट के लोग जो हैं उनके साथ ताउन कर सकते हैं, बिल्कुल हाजिर हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको बहुत शुक्रिया कि बहुत कम वक्त में इन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। और ये कि आई थिंक नथिंग मच वी हैव एनीथिंग। बहुत से लोगों ने जो है वो हमारे जो पॉइंट है वो तो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए और क्या हमारा वो है और फीलिंग है और क्या फील करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को सबके आने का और बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। जाफरिया एसोसिएशन ऑफ कनेटिकट आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने इससे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बोले जी जी ये हमारे एक और यूथ है जो आप लोगों से प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Today I will be reciting a poem. Black flag drapes the wall. A majlis has gathered to answer Hussein's call. Labbaik, labbaik, the voices rise and swell, free to mourn without the threat of a jail cell. For many Shias around the world, a reality, killed for their love of Ahlul Bayt and savage brutality. O Hussein, your followers are still being persecuted. Those who possess knowledge and truth are still being executed. Relevant now more than ever are the events of Ashura, innocent being slaughtered as they were in Karbala. Safe and sound in our majlis, we claim we would die for Hussein, yet we stay silent as another Yazid takes reign. There is no worse crime than deafening silence, allowing injustice to occur through bloodshed and violence. Under the guise of unity, we don't speak out and rise. How can we claim to follow Hussein, but ignore the oppressed cries? For you see, his message is not just for our Muslimin, it's universal regardless of race, class, or deen. But we sell our souls for less than their worth, as corruption seeps to every corner of earth. Muslims stay silent like the people of Kufa,
Selective outrage has plagued our ummah. They take to the streets chanting Free Gaza. But where are the protests against the genocide of Quetta? I write behind the privilege of a computer screen, never having to witness the trauma young children have seen. An endless mass of corpses, young and old, voices unheard and stories untold. A crimson river of blood has steady flow, reflecting realities that you and I will never know. Like the innocent blood of an infant seeping, the sound of bombs and bullets drowning out a mother's weeping. A heartbroken mother who has to bury her son, life lived in terror from drones you can't outrun. A wife forced to watch her husband get shot, ridiculed and harassed and sent to prison to rot. Those who stare death in the face every day with no family left and no home to stay. Women whose screams are stifled as they are beaten and raped. Systematic cleansing as history is rewritten and reshaped. Where is the voice of these voiceless? Our own brothers in faith call us scoffers, unworthy of justice, but history indeed does like to repeat. The message of Karbala they can never defeat. This is for those brave souls who the world ignores, killed for their love of Hussein, who the enemy abhor. This is for the voiceless Shias of Pakistan, the occupied people of forgotten Afghanistan, those in Iraq who lived in constant terror and fear, from the ISIS swines who carry heads on a spear. This is for you, the downtrodden and hopeless. This is dedicated to you, the voiceless. I do have some other remarks that I would like to say. Our roots are set in Karbala, and no force in the world will ever be able to eliminate us. Generations after generations of oppressors have squandered their lives and died in an attempt to suppress Shia and Shiism to no avail. No bomb, sword, or bullet will ever disturb our faith or mission, for we have Allah as our protector, our guide. They will never be successful, although they may be larger in numbers or apparent in power. That is because Allah is the protector of those who believe, and because the unbelievers shall have no protector for them. Silva. Thank you everyone for being here tonight. Thank you for MWM for sending this message out to us. I would really like to thank the youth who worked with me and Alina this past weekend or week to get this together. We will now light the candles and then head outside. And अंदर ही यहाँ पे लाइट्स ऑफ करके तो हम यहाँ we just went outside. Sorry. Oh, okay, so I'm just gonna do a few ones just for the hands. Labbaik ya Imam. Labbaik ya Imam. Labbaik ya Imam. Labbaik ya Mahdi. Labbaik ya Mahdi. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein.